is infectious disease and how to prevent them. So let us start with the new topic. As I told you the first only, if mother is having a headache, okay, then you will also get a headache. No, you will not get a headache like that. Mother grandpa's baggage are not passes on from them to the others. However, one has to take care to stay away from people who are ill with a few means like a cold and cough or a fever. Cold, ringworm, scabies. This is a disease of skin. Okay, chicken pox. Everyone must be knowing chicken. This disease spread from one person to the other. ये spread हो सकती है छूने से ये spread हो सकता है सर्दी खांसी ये सब when we are coughing, when we are having a cold, what we should do? We should cover our face, we should cover our mouth while coughing, okay? Or while sneezing. Because जो सलाइवा उड़ता है स्नीज करने से वो सलाइवा सामने जाता है सामने के पर्सन में माउथ के अंदर चला जाता है then he also gets started flu and cold and all that okay such diseases are called infectious diseases. What causes this disease? They are caused by microorganisms. Every infection disease is caused by a specific microorganisms or a germ. It's a small germs you cannot see with your naked eyes. It can be seen with a microscope only. Okay, when the germs of a particular disease enters the body, and begin to grow, person gets diseases. How is one person disease passes on to the another person? ये तुम लोग को अभी you can think this ये कैसे हो सकता है दूसरे का बीमारी मुझे कैसे हो सकती है उसकी स्कैबिस मुझे कैसे हो सकती है because of the germs. When you shake a hand with that person, if he has a scabies, if he has a disease of a skin, the germs प्रेजेंट इन दैट स्किन उसके हाथ पे जो जर्म्स है वो तुम्हारे हाथ पे जा सकते हैं व्हेन यू शेक ए हैंड विद दैट पर्सन इफ यू बोलते ना उसको हक करोगे तो जर्म्स उसके जर्म्स जो उसके बॉडी पर है वो तुम्हारे बॉडी पे आ सकते हैं एंड गेट स्टार्ट इन्फेक्टेड ओके तो आप लोग ऐसे बीमार हो सकते हैं अभी कोरोना वायरस सम ऑफ द पहले के मीन्स लास्ट ईयर व्हाट दे सेड डोंट शेक ए हैंड नमस्ते करो एंड ऑल दैट यस और नो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन गेट अ कोरोना वायरस ओके उससे भी शेक हैंड करने से या फिर छूने से इसलिए लोग बोलते हैं मेंटेन अ डिस्टेंस इफ अ पर्सन इज हैविंग अ कोरोना वायरस उसको क्या करते थे हम लोग क्वारंटाइन करते थे क्वारंटाइन में क्या 14 डेज के लिए उसको एक रूम में बंद करके रहते थे और वहाँ पे उसको खाना भी ना देते थे ये सोनो मीन्स उसका जर्म दूसरे के बॉडी में ना जाए When a person has a cold, the germs from his body spread in the air when he cough or a sneeze. हच्ची ये मुंह से जो आता है ना पानी निकलता है हच्ची करने के बाद स्नीजिंग करने के बाद वो जर्म्स पूरा स्प्रेड होता है इन द एयर यू कैन नॉट सी दैट और वो एयर दूसरा इनहेल करता है फिर हो क्या उसको भी yes like that when the germs enter other person's body they can also get the disease spread typhoid spread when its germs are passes on by a person ill with a typhoid to another person spread of disease through the air now we will see the spread of disease through the air से कौन सा disease होता है okay the germs of a disease like influenza means a cold are present in the spit थूकने से और सलाइवा जो अच्छी करने से जो आता है ना बाहर थोड़ा सा पानी होता है या कफ करने से आता है पानी अपना सलाइवा में इसके अपनी थूकी ओके ऑफ द पर्सन हु हैज द डिसीज when he cough, spit or sneeze, they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit. When other people breathe in that same air, the germs enter their bodies. Diseases of the throat and the chest spread through the air. For example, tuberculosis, swine flu, etc. That is why we are told to cover our nose, our mouth when we cough or sneeze okay इसलिए हम लोग करते हैं करके ये हम लोग करते हैं कवर करते हैं our face okay do not cough or spit in the public places in the open area okay can you see this these are the diseases spread by the water it is our responsibility to prevent the pollution of public sources of the water but some of the people are washing the animal
some are washing the utensil, okay, some are what they are doing, some are doing toilet also, some are washing the clothes also. कहाँ पे वो पानी में? And see, this person is taking that water to his home. Means कितना germs है उसमें? Some are doing, see here, means so dirty. This boy is doing bath also over there. Means this is spread by the water. The disease spread by the water. We will see now. The germs of disease of the intestine like typhoid, cholera, diarrhea, has also of jaundice are present in the feces of the affected person. If the feces get mixed with the water, germs get mixed with the water, the germs in it also enters the water, okay, and that water if we drink तो क्या होता है हमारे बॉडी में जाता है and we also get infected. Another person drinks water which has been contaminated by these germs. They enter his intestine too, and that person can get the disease as patient. वो आराम से वो डिसीज हो सकता है, जो दूसरे को है वो उसको भी हो सकता है, बिकॉज जर्म्स हैड एंटर हिज बॉडी, उसके इंटेस्टाइन में वो जर्म्स पहुंच चुके हैं, सो ही हैज बीन इन्फेक्टेड बाय दैट फ्लू और टाइफॉइड एनीथिंग, diarrhea, cholera. Okay, children, I want to ask you something in the chat box. I want to answer. You are eating a food, outside food. The food is covered or not? Come on, tell me. If the food is not covered, what will happen to you? Your stomach will get upset down. You will get a loose motion. You will get a diarrhea. या फिर food poison. Okay, because the germs spread on the food. कहाँ से होते हैं food पर germs? Can you tell me? Stomach pain? Yes. Okay, vomiting, very good. You will get a vomiting, gastro, very good. Okay, the flies sitting on the food. जो फ्लाइज गंदगी पे बैठती है वही वो आके वहां पे बैठ जाती है, उनके पैरों को गंदा लगता रहता है. यस और नो? यू कैन नॉट सी दैट. द पोल्यूशन, सो मच पोल्यूशन इज देयर, वही धूल मिट्टी उस पर बैठी रहती है, वही हम लोग अगर खा के, ओके, तो क्या होता है, स्टमक गेट्स अपसेट डाउन. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन दिस मैनर, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water source of defecting in the bank of the water. This was a disease spread by the water like a typhoid, cholera, diarrhea and jaundice are spread by the water. These are the disease spread by the, I am again repeating, like a typhoid, cholera, diarrhea and jaundice are spread by the water. Okay, now see. As I told you, if you are eating a food, outside food, and see that the food is not covered at all, see the flies flying over the outside, you may have heard of a number of people getting gastros or diarrhea after eating contaminated food at a function. This is spread through the food also. This is also called a food pollution. Okay? You have seen flies on the dirt. Everyone knows that flies are sitting on the dirt, as I told you. When they sit on the faces of a person, you has an intestinal disease. The germs of the disease stick to their leg. Okay, the germs of the disease stick to their leg, and that only fly will sit on the food. And that food, if we eat, if we cannot see that with our naked eyes. हमारे eyes से हम लोग नहीं देख सकते वहाँ पे germs घूम रहे हैं. You cannot see. इफ वही फूड अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि जैसे जम्स यहाँ से वहाँ तैर रहे हैं, घूम रहे हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग, अरे बाप रे, हम लोगों ने ये खा गया, अभी क्या होगा मेरे पेट का, ए मम्मी मम्मा मुझे ये हो गया वो हो गया. वी विल स्टार्ट थिंकिंग. ओके, व्हेन द सेम फ्लाइज सिट on our food, the germs enter the food. If we eat that food, the germs enter our body and we can get the disease. That is why it is important to always keep our food covered. In our houses, what our mommy does, बर्तन बांच बींच के फिर खाना पका दिए, then she skips then थाली रखते, cover the food, okay, like that. So our mommy or our mother or our grandmother keeps the food. Food is handled while preparing or serving it. Okay, if someone who has an intestinal disease handles or serve food without washing his hands properly, even some of the person is having a skin disease and he is not washing his hand and making a food, then also germs can go in the food. Okay, the germs sticking to his hand can enter the food contaminated in this way can also cause diseases. One must avoid eating it. Maintaining cleanliness everywhere is beneficial
only. Keeping food covered ensures that flies cannot sit on it. एक भी मक्खी आती है हम लोग ऐसे निकलो इसको बाहर, निकालो इसको घर के बाहर, लाइक दैट वी आर डूइंग बिकॉज वी डोंट लाइक, बोलते हैं ना फ्लाइज वी डोंट लाइक, चलो मच्छर तो रात को आ जाते हैं, coming in the morning also. Okay, dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it. It prevents the microorganisms from the entering the food, and spread diseases is also prevented. Spread of disease by the insect, as I told you first only. क्या काटता है अपने को? मच्छर काटता है. एक मच्छर बोलते हैं ना, काटने के बाद क्या होता है? मलेरिया हो सकता है. You may be aware that one can get malaria from the bite of certain kinds of mosquito. When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in the person's blood enter the mosquito's blood. With the blood it sucks. जो ब्लड वो सक करता है, मीन्स पीता है, वो ही जाके दूसरे को काटता है. अगर दैट पर्सन इज हैविंग सम जर्म्स इन हिज बॉडी, वो जर्म्स अपने बॉडी पे आ जाते हैं. सेम लाइक दैट, इफ दिस मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, द मलेरिया enters that person's body too, and he too can get a malaria. Insect like mosquitoes and flies diseases. That is why we must stop such insect from breeding. Okay. Spread of disease by direct contact, like handshaking, gale milna, and all that. Ringworm, scabies are diseases that affect the skin. Their germs are found on the skin. If someone else comes in contact with the skin of a person having this disease or wears his clothes, then that person can get that skin disease too. That is why it is better to avoid sharing clothes also. If some of the person having disease like ringworm, scabies, okay, can you see this ringworm? और मीन्स गोल गोल होता है, रेड कलर का आ जाता है, अपने गले के ऊपर रहता है, या फिर बोलते हैं ना अंडर आर्म्स रहता है, लेग के ऊपर आता है रिंगवर्म. स्कैबीज ऑल्सो खुजलाते रहते हैं, देखो वाइट हो जाता है उनकी स्किन, लाइक दैट. अगर तुम लोग उनके कपड़े पहनोगे, वो जर्म्स उनके कपड़ों पे स्टिक रहता है. दैट जर्म्स गो एंड यू आर वेयरिंग that person who is having a ringworm or a scabies, that germs enters in your body. An epidemic of a disease. Germs of diseases like the flu or conjunctivitis spread quickly through the air. So, many people can get such disease all at one time. If the water of a common source is contaminated by the germs of a disease like cholera, then there is a dangerous of all those who drink that water getting the disease. जिन्होंने जिन्होंने वो पानी पिया है कंटेमिनेटेड गंदा पानी, तो जितने जन ने पिया है उनको क्या हो सकता है? दे कैन गेट अ डिसीज. ओके, if at some place mosquitoes breed in a large number, you know that breeding of mosquitoes is so many in a large number. एक नहीं होते, वो लोग इतना एग्स डालते हैं ना, ब्रीडिंग मीन्स क्या, एग निकालना, एग्स डालना, वो पानी में डालते, वो बड़ा पटपटा बड़े हो जाते हैं, like that. Many people there can get a malaria. People in one area get the same infection disease all at the same time. We say that there is an epidemic of the disease. Means सब जगह पे वो spread हुआ है disease all over the India, all over the world, like that. Prevention, what prevention take about this disease? Okay, now we'll see that. To prevent disease from spreading through water, this at the water work. In smaller towns and villages, bleaching powder is added. If you don't know what is bleaching powder, please ask your parents what is bleaching powder and why that is added to the water. Okay, to communicate source of water to kill the germs, make the water safe for drinking. Okay, but nowadays we are having a purifier. So we are purifying the water directly, okay, like that. When there is an epidemic of gastro, सब जगह gastro फैला हुआ है, okay, और jaundice फैला हुआ है, people are advised to boil water before drinking it. To prevent mosquitoes from the breeding, we must ensure there is no stagnant water, जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, in the surrounding area. But if that is not possible, insecticide have to be used. हम लोग अभी स्प्रेड क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड, लाइक अ हीट लगाते हैं ना घर के अंदर, ओके, लाइक दैट. Thus,
diseases like malaria can be prevented. इसके क्या होता है? Diseases like malaria can be prevented. People who have a serious infection, disease like tuberculosis or swine flu are quarantined. अभी हम लोग भी क्वारंटाइन हुए थे, जैसे कोरोना हुआ किसी को तो है ना 14 days एंड ऑल दैट. मीन्स खुद अपना रूम खुद के अंदर बैठने का, घर के अंदर ही बैठने का, किधर बाहर जाने का, नो नॉट टू टच एनीवन. अगर इफ वी आर क्वेयर वो पूरा थिंग अपने को धोना पड़ेगा, लाइक दैट. देयर आर सेपरेट वार्ड्स इन हॉस्पिटल फॉर पीपल विद इन्फेक्शंस, डिसीजेस, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल भी उनका अलग रहता है. यूज बाय द पेशेंट्स आर वॉश्ड विद अ जर्मिसाइड. किससे वॉश करना है? जर्मिसाइड से वॉश करना है. द स्पिचल ऑफ अ पर्सन हु हैज ट्यूबरकुलोसिस वेसल, जो उनका थूका हुआ रहता है, मीन्स ट्यूबरकुलोसिस मीन्स कफिंग एंड ऑल दैट. अगर वो उनका कफ निकल रहा है, ओके, हाँ, क्या करते हैं देखो, ट्यूबरकुलोसिस कलेक्टेड इन वेसल, इसको वेसल में कलेक्ट करते हैं एंड कवर्ड विद द जर्मिसाइड लाइक फिनेल. सच प्रिकॉशन हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम स्प्रेड अदर्स. उस पर क्या डालना जरूरी है? फिनेल डालना जरूरी है. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू एयर, people should cover the mouth when sneezing or coughing and avoid spitting in the open area. If it is necessary to be with such an patients, a mask should be worn, cover the nose and the mouth like coronavirus. I will see about the vaccination. So we have taken, all has taken the vaccinated of coronavirus. इतने सालों के बाद हम लोग ने वैक्सीन लिया है, okay? When disease is producing microorganism enters our body, the body resists the disease or fight the germs. That is why many times we do not get a disease even if germs enter our body because we have taken a vaccine. Now मुझे कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि I am taking vaccine. Both the vaccine has been done, taken by me. और ग्रेस ऑफ गॉड आई डोंट हैव, मीन्स मुझे कोरोना वायरस हुआ ही नहीं, कोरोना हुआ ही नहीं. ओके, अनदर वे टू प्रिवेंट डिसीज इज वैक्सीनेशन. Our body develop resistancy to a particular disease if we are vaccinated against it soon after a baby is born. छोटे बच्चों को भी वैक्सीन देते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं और क्या 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 पोलियो का, इसका उसका चालू रहता है उनका वैक्सीनेशन. ओके, शी इज गिवन अ ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन. When the 1.5 month old, she is given vaccinated again diphtheria, whooping cough, tetanus and polio का देते. इतना सारा वैक्सीन बेचारों को चालू ही रहता है. छोटे जब रहते हैं, चलो डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनको वैक्सीन है. आज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उनको वैक्सीन ही, 5 साल तक उनको वैक्सीन देना ही है. 2 more doses of vaccination are given to the interval of 1 month. The vaccines for diphtheria, whooping cough, and tetanus are combined into a triple polio vaccine. Triple vaccine given as an injection. The polio vaccine is given orally. अभी पोलियो का डोज नहीं कर देते बच्चों को, देते ड्रॉप्स, 2 बूंद, like that. Public health service facility. Now we'll see about the public health service facility. To prevent the spread of infection disease and epidemic, health and community welfare programs are undertaken. For this so many programs are there. Like कोरोना वायरस के लिए भी कितना प्रोग्राम बनाया था कि ऐसा करो, ऐसा प्रिकॉशन लो एंड ऑल दैट. Undertaken at the national level. Community programs for vaccination are also undertaken as a part of national health scheme. Children are given the vaccines by trained people. Special camps are arranged for this purpose. Same as like कोरोना वायरस कैंप था, कैंप में ये स्कूल में वैक्सीन मिल रहा है, वो उधर वैक्सीन मिल रहा है, तो हमको नंबर लगाओ या फिर ऑनलाइन बुकिंग करो, इतने जन को वैक्सीन मिला, अभी तक कितने जन ने लिया, भगवान जाने. कैंप्स बनाए रहते हैं. ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैज बीन एस्टेब्लिश एट द विलेज लेवल. देर आर ऑल्सो फैसिलिटीज लाइक मोबाइल डिस्पेंसरीज. मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होता है? एक बस रहती है, उसके अंदर डॉक्टर्स रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, इसको बोलते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी. Ambulance are there, and a welfare funds for the disabled. Services like the examination of urine. Examination of urine means check करना, blood pressure, Xerox, sorry, X-ray. Then comes the ultrasound and other scan are also available through the health programs. Thus, patients are get the service they need without delay. Okay. So this was our chapter. I hope everyone understood. So what we have learned, we will see it faster. Okay. Diseases caused by microorganisms are called infection disease. Microorganisms that cause disease are also called germs.
Every infection disease is caused by specific microorganisms or germs. Infection disease spread through the water, food or air by direct contact or through insect bites. Okay, if care is taken to prevent germs from entering the body, the spread of disease can be prevented. बच सकते हैं if we are taking a precaution. If many people in the place gets a disease at the same time, like coronavirus, it is called a epidemic. Vaccination is an excellent method of preventing disease. Okay, children, this was our lesson.